Hi everyone, I am Dr. Apala and welcome to this new session where we will clear all the doubts related to the coaching aspect of UPSC, whether coaching is required or not, which coaching to take, whether to come to Delhi or not, and whether to go for online coaching or offline coaching. So I hope by the end of this video you have a little mental clarity on the entire coaching arena of UPSC. So the first question and the first most major question that is being asked is whether to take coaching or not. So for that I'd say that it depends. See, there are two types of people who enter this UPSC journey. The first one is people with zero clue about UPSC like me. So I had to take coaching because that worked as a starting factor for me, just a starting push for me to get me initiated into UPSC. तो कोचिंग ने एक तरह से मुझे UPSC में इनिशिएट किया. But if you're someone who has certain background, who has certain people in your life जो कि आपको गाइड कर सकें, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें, बहुत लोगों के सिबलिंग्स होते हैं, बहुत लोगों के सीनियर्स होते हैं. So if that is the case, then definitely coaching can be avoided. ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोचिंग बस एक गाइडिंग फैक्टर की तरह काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ दे सकता है आपको. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी ही करना पड़ेगा. बिकॉज अनलाइक आवर 11th and 12th क्लास कोचिंग्स ऑफ नीट एंड जेई, यूपीएससी एक बहुत ही डिफरेंट एग्ज़ाम है, बहुत डायनेमिक एग्ज़ाम है और इसमें स्पून फीडिंग बहुत ही लिमिटेड लेवल्स तक हो सकती है. सो अगर आप इस नोशन से आएंगे कि कोचिंग जाके आपको सब आ जाएगा और तुरंत ही इस एग्ज़ाम के सारे सीक्रेट्स रिवील हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा. कोचिंग को एक सपोर्टिंग फैक्टर की तरह लीजिए अगर आपको लेना ही है. बट एट द सेम टाइम आई से दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस आउट कर देंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether to come to Delhi or not. So as we all know that Delhi is the UPSC hub and we have Old Rajendra Nagar and Mukherjee Nagar and these are literal hotspots of UPSC. So इसी नोशन के साथ मैं भी आई थी ओल्ड राजेंद्र नगर and I shifted there and I stayed there for an year. So I talk about myself that staying in Old Rajendra Nagar for me particularly was not very fruitful because as I mentioned I did not have many friends. I used to feel very depressed in Old Rajendra Nagar and मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी वहाँ पे. आई वुड ऑलवेज फील वेरी ट्रबल्ड इन दी हेड वहाँ पे. तो व्हाट हैपेंड दैट वन डे माय पेरेंट्स केम टू विजिट एंड व्हेन दे सॉ मी दे सेड जस्ट पैक योर बैग्स एंड वी आर टेकिंग यू फ्रॉम हियर. तो मैंने बैग पैक किए और मैं घर आ गई. एंड इनफैक्ट जब मैं घर आई दैट वॉज द टाइम व्हेन आई एक्चुअली बिगैन स्टडीइंग प्रॉपरली, क्योंकि एक इमोशनल स्टेबिलिटी थी and maybe staying at home suited me more. But at the same time I'd say that बहुत सारे situational factors होते हैं. For example, I was fortunate enough to have a room of my own in my house, but at times that is not possible. तो अगर आपके घर पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आप definitely दिल्ली आने का ट्राई कर सकते हैं. But if you are someone who has a comfortable stay at home एंड आप दिल्ली आना चाह रहे हैं सिर्फ दिल्ली आने की वजह से, तो आप इसको आराम से इवैल्यूएट करें एंड एनालाइज करें, क्योंकि कमिंग टू दिल्ली ऑल्सो इज़ वेरी फाइनेंशियली ड्रेनिंग. दैट इज़ वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू कीप इन माइंड. तो जो भी सिचुएशन आपको लगती है उस हिसाब से आप डिसाइड करें. बट आई से दैट स्टेइंग एट होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर होम वॉज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. सारी ही रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं आजकल, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. देयर आर कोरियर फैसिलिटीज़, यू कैन गिव योर टेस्ट ऑनलाइन. मेंस टेस्ट सीरीज मैंने सारी ऑनलाइन दी थी. सो दैट वर्कड वेल फॉर मी, बट यू कैन डिसाइड व्हाट वर्क्स वेल फॉर यू. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज whether to go for online coaching or offline coaching. So I'd say that there are pros and cons of both. ऑफलाइन कोचिंग का ये प्रो रहता है दैट यू गो एंड गेट टू सिट इन अ क्लास एंड हैव दिस डेली शेड्यूल of physical learning apart from mental learning.
बट ऑनलाइन कोचिंग का ये फ़ायदा है दैट यू एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम. ट्रैवल टाइम बच जाता है आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम बच जाता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. आई थिंक फॉर मी हम बहुत बार टाइम वेस्ट ही कर देते हैं जब हम जाते हैं कोचिंग, एंड वहाँ वी एंड अप स्टैंडिंग टुगेदर एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. So if that can get saved, then anything is fine. But I'd say online coaching is as good as offline coaching. Coming to the last aspect of which coaching is good. So I'd say that any and every coaching has good teachers, has good aspects, and has not so good aspects. So for that, don't run behind anything in the market. जो भी आपको आपके लिए सूटेबल लगे, जिसमें भी आपको आपके सब्जेक्ट्स के टीचर्स मिल रहे हों, आप वो कोचिंग ज्वाइन करें. बहुत ज़्यादा भागे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पीछे, बहुत ज़्यादा फोमो ना फील करें कि मेरा फ्रेंड उस कोचिंग में जा रहा है बट आई एम ओनली गोइंग इन दिस कोचिंग. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सारे कोचिंग का मटेरियल और सारे कोचिंग का काम सेम ही होता है एक तरह से इस एग्ज़ाम में, और आपको सेल्फ स्टडी से ही ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा. तो आप जिस भी कोचिंग में हैं आप उसमें खुश रहें, आप अटेंड करें क्लासेस, एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ anything else, and no need to run behind all coachings. So that was all for today's session. If there's something more on which you need clarity, then put it down in the comments below. I try to answer them in the next video. Thank you.